about selecting main points. I also talked about once you select your main points, your selection of main point will depend on the kind of audience you have and the time you have. Okay, so how many points you are going to add, which exact points. Okay, if it's if the knowledge level of your audience is average, you are not going to add very heavy points. Okay, so it's also very important to add to order. Okay, how you are going to start. Okay, whether you are going to start with a problem and then you are going to give them a solution. Say for example, it's possible, I guess I don't remember whether I told you this or not. I can give you a problem and then you can suggest me some solution, and based on those solutions I can teach you the theory. This I did at the beginning of CV. You remember at the beginning of CV I asked you a few questions. Will you add these things in CV? How many pages? So I gave you questions. Even before I started teaching you, I gave you open questions, you responded, and based on your response I taught my theory. Okay, so that's the kind of problem solution kind of thing. And for formal letter, it was topical. Okay, because first I gave you the types of formal letter, and then the components of formal letter, and then the language of the formal letter, and the way you should name your attachment. So it's kind of topical thing. And it is also possible to present in a chronological form. So can you tell me that when I'm teaching CV, okay, take my teaching of CV as a presentation, and what is the order I'm following while teaching CV? Is it chronological, is it topical, or is it problem solution? Which order I chose to teach CV? You can put it in the chat box. I hope you got my question. I asked you a question that while teaching CV, I have certain points. What order I chose? So Anku says it's chronological, Uddesho says it's topical, Tathagato says it's chronological. Anyone else? Few other responses? Hey, you can respond. It's not an exam. What if it's okay if it's wrong? You can always try, isn't it? You already have 3 options. Just choose any one, whatever you think is right. But then it's important that you respond. Shunil says chronological. Okay. Okay, it's chronological. It's chronological. I guess Anku, Tathagato, and Shuli gave the right answer. It's chronological. See the way I presented it. Discussion outline, planning, designing, delivery. So you plan first, you get the questions, you get the answers, and then you design, and then you deliver. And even for designing, see the post that I made at 146. Okay, these are the 7 points of designing. And see, selecting main topics and then support material, writing presentation,
how to introduce, deciding present tense, during presentation, how to conclude. See, introduce, during presentation, conclude. Do you understand? It's chronological. It's exactly the same way the presenter will do it. The presenter will start planning first, and then designing first, and then deliver. And then even for designing, the presenter will first select main points, and then select support material, and then write down the presentation, then introduce himself, and then we'll add presentation aid during presentation, and how to conclude, which conclude presentation, and then delivery. So do you understand? It's roughly chronological. Udeshu, did you get the logic? Ma'am, I think CV was more like topical, because chronology is related to time. Like CV was hot in chronological. I totally don't understand. Wait. I guess I asked the question wrong. Did I say CV? It should be presentation. The presentation. When Udeshu replied, I realized that my question was, what is the method? What is the order I chose for presentation, not for CV? I guess I mentioned CV. That's the reason you got confused. For CV, it was. Let me check on the way. Wait. I'll check what I did for CV. For CV. Hold on. For CV as well, Udeshu, it's chronological. Even for CV. We started with, you first choose the component, and चला गया, वो आ रही है. मैम रिकनेक्ट कर रही है. आशीष लेफ्ट ज्वाइन करके स्कैम क्यों कर रहा था मैं उस टाइम? क्या? अरे मैं नेट ऑन कर रहा था.
मैंने काम नहीं कहा था, बार बार वो काला काला स्कैन आ रहा था, मैं ठीक कर रहा था। स्कैम 1992 देखा? नहीं, तू ही देखे तो। ओ भाई 9.9 से ज्यादा IMDb रेटिंग है, बहुत मस्त है, देखना। अच्छा है क्या? अच्छा है क्या? क्या है, किस चीज के बारे में डिटेल में बता। स्कैम के बारे में, स्टॉक मार्केट स्कैम। हर्षद मेहता बोल के एक आदमी था, उसके ऊपर क्या करता है वो? देखो अरे स्टॉक ट्रेडर था, तो इंडिया को कैसे स्कैम किया, पैसे कैसे उड़ा दिया, उसके ऊपर है। मैंने फर्स्ट डे देख लिया। इंडिया के साथ उड़ा क्या? इंडिया के साथ क्या? हाँ, अरे और- विजय बैंक का वाइस प्रेसिडेंट सुसाइड कर लिया उसके लिए। हाँ, मैंने फर्स्ट दिन सुबह स्टार्ट किया था 10 ये बजे, क्या नाम है उसका? रात तक देख रहा था। अरे मैंने भी वो स्टार्ट एक है किया ना जो स्कैम करके इंडिया छोड़ के भाग गया, क्या नाम था स्कैम से? कुछ नाम था? नहीं, विजय माल्या, वो तो हाँ, वो एक है। भाई वो अलग है। विजय माल्या और नीरव मोदी मिलके जितना वो स्कैम नहीं किया ना, उससे ज्यादा का वो स्कैम कर दिया। ओहो, हाँ, देखो। और वो अरे वो लोग पैसा लिया था, और ये हर्षद मोदी मेहता ने पैसा नहीं लिया, सिर्फ पेपर से सब कर लिया। हाँ, पैसा खुद बनाया, सिंपल भाषा में। हैं? देखना ना, देखने से समझेगा। अरे उसने कैश, मतलब हाथ में कैश नहीं लिया, विजय माल्या ने जैसे पैसा लेके उड़ा दिया, इसने ये सब नहीं किया, उड़ाया नहीं, लेकिन स्कैम किया। लो, फिर ऐसा तो कवर ना अच्छा नहीं लगा, उसका कवर पिक अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए देख रहा था। तब बिग बुल देख लेना, अभिषेक बच्चन का आ रहा है ना, सेम स्टोरी है। उसी का है, बस वो फिल्म है और ये वेब सीरीज। हाँ। वेब सीरीज ज्यादा कोई अच्छी। anime हाँ, अच्छा पूरा बता, detailed है। कोई नया आपने क्या सब देख रखा है। तू जैसे डोरेमोन देख ले, नहीं, वो एनिमे नहीं, वो बर्बाद एनिमे। तब कुछ ही का में देख, ठीक है, एनिमी है। हेंटाई देख के खत्म कर। नहीं, ये भी नहीं। फिर ढंग का देख देख के थक चुका, बहुत ज्यादा एनिमे देख लिया, और भी देखना अजीब सा हो गया। मुझे लगा वो बोलेगा बहुत ज्यादा वो देखा। हमने जो बोला वही खा गया। मैम का नेट चला गया कि तार काट दिया। लंच कर लिया सब लोगों ने। इंटरनेट कुछ स्कैम नहीं आया तो। 2020। तुझी कुछ मैम नहीं आए तो लंच किया तुम लोग